क्या बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लर्नर को टेक्निकल आना इम्पोर्टेंट है या टेक्निकल के बिना भी वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स करियर परस्यू कर सकते हैं? देखिए, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में टेक्निकल आना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका एक बेस होना चाहिए. Hello, welcome Mr. Saurabh. Thank you for joining our talk show. Let me introduce our special guest, Mr. Saurav Jaiswal. Saurabh is the founder and managing director of Diverse Genomics Private Limited. Before going further, let Saurav also explain about. Yeah, so I'm the co-founder and managing director of Diverse Genomics. Diverse Genomics is a biotech research company in Calcutta where our specialization is into cancer genomics, reproductive genomics, and infectious disease genomics. So we are currently working on a platform where we want to develop a product where from a single blood test we can identify over 54 different type of cancers, and if any one of the cancer is present, we can predict it by the accurate location itself. So for example, like somebody who is having a breast cancer currently and they don't show up the clinical symptoms, by a screening process of a simple blood draw test, we can identify future illness and future cancer treatment for people as well. So this is one of the domains we're working on. Other is reproductive genetics, where suppose if a couple is planning for a baby, if a baby has some other rare diseases, so it can be predicted in the future. You know, after the delivery, if you find that okay, the baby is suffering from a Down syndrome or a trisomy 21 chromosome defect, so that all can be handled safely, not before the time. So our main progress is on the prediction and prognosis and the better way of wellness segment in the domain currently. What are the trends in bioinformatics, Saurabh? If we talk about the newcomers coming in the industry, they are learning something and industry expects something. So can you little bit explain about the trending, what's going on in bioinformatics? Like I'll firstly explain like what is bioinformatics. You know, the bioinformatics is a broad and a interdisciplinary field that involves application of computer science, statistics, and mathematics to analyze and interpret biological data. You know, and it has an immense future in India and abroad, and it is a very emerging field, and it will take like leaps and bounds into maybe 3 to 5 to 10 years because everything is dependent on bioinformatics right now. Like if you see the perspective of drug discovery or single cell analysis or personalized medicine, so this has a huge potential, and it is kind of a base where the biological data can be analyzed and interpreted for the sake of good for the human health. Correct. So if you see like personalized medicine, so personalized medicine is a way to have your own genomic profiling, and with bioinformatics is playing an important role in the development of personalized medicine, which involves a tailor-made medicine, you know. So it's not about the general concept of a medicine or a drug. It will be planned according to your genomic profiling, and it will help you from getting the side effects of the drugs generally, what we see in the current scenario of cancer treatment and other therapeutics. For example, some patient who is going under chemotherapy, with the next generation sequencing, we can analyze the genomic profile and we can find the mutation which is responsible for the particular type of cancer. And based on that, a personalized medicine or a therapy can be programmed. Correct. So for that, you need to analyze a huge amount of big data and genomic data. Great. So, can we talk about if any newcomers want to pursue their career in bioinformatics, what should be the knowledge required for bioinformatics learners? What are the things should be looking for bioinformatics? Right, as I told you, like it's a rapidly growing field where high demand of skilled professional is required. You know, so the newcomer need to have develop core skills. Okay. So the core skills include mathematics, you need computer science, and you have to have an updated knowledge, you know, like because what we have been taught in the traditional colleges and what we are doing currently in the industry, it is way more ahead the time. So you need to have a pace with the current development, what is happening, like companies like OpenAI and ChatGPT. So the kind of computation power they have, once the quantum computer would be increased and the computing power would be increasing. So like right now, bioinformatics it's a very niche area, right? And it is at a very developing field also.
So right now, if you see, it's just a starting phase. It's still a baby right now. बायोइन्फॉर्मेटिक्स अपनी सोचे कि एक बच्चे की तरह है जो कि अभी बड़ा होना बाकी है. So there is a huge potential in the future. Right now we are also discovering the use cases, how we can deploy different kind of bioinformatic tools in our day-to-day scientific expertise and research. So like you have to have a advanced education type of mindset where you have to have a self type of learning. And and you need to gain some practical experience as well. So somebody who's looking for a future in this bioinformatics, so the newcomers who are after a BSc or a biotech degree and then pursuing bioinformatics, so you need to have a biological understanding in a very good way, and then a statistical understanding, as well as you need to understand how the computer coding and R, Python, Java, and all these programming languages work. So that it gives you a base. And once you have that thorough thing, you can go and enroll for any company, or you can take a job in a drug company, because it has a huge potential. So currently, if you ask me, a fresher in a bioinformatics would get a salary maybe from 6 to 10 lakh rupees a year in India. And maybe it is the first or the second highest paying job right now. And once you are expert in the field, somebody who has experience of maybe 2 to 5 years down the line, so it has an exponential growth. But right now it is at a very early age, and there is a huge potential that has to be discovered from bioinformatics. Correct. So Saurabh, as I understand very easily, like bioinformatics is a technical topic, right? Right. So क्या बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लर्नर को टेक्निकल आना इम्पोर्टेंट है, या टेक्निकल के बिना भी वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स करियर परस्यू कर सकता है? देखिए, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में टेक्निकल आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका एक बेस होना चाहिए. जैसे अगर आप मैथ्स की बात करें, इफ समबडी इज अफ्रेड ऑफ मैथ्स, आपको डर लगता है मैथ्स से, तो इस फील्ड में बिल्कुल आए, क्योंकि आपका डे इन डे आउट 24 घंटा आपको मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स पे ही काम करना पड़ेगा. So moreover, this kind of data analyzing or data strategy can be work out in bioinformatics. Right. उसके साथ आपको सिर्फ नहीं, but you have to have a good analytical skills also. ये हो रहा है, आपको सवाल पूछने बहुत अच्छे से आना चाहिए. अगर ये डेटा मिला है हमें, तो ऐसा ही क्यों मिला? What is the reason behind it? अगर उसको ट्वीक करके हम एक अलग सा पाइपलाइन बनाते हैं, तो उससे हमारा क्या रिजल्ट आता है? क्योंकि फॉर एग्जांपल जब हम सीक्वेंसिंग करते हैं, जब हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग करते हैं, तो एक सैंपल से, जैसे अगर हमें कैंसर का सैंपल मिला है, तो एक सैंपल से हमें काफी डेटा, बायोलॉजिकल डेटा मिलती है, बट उसको एक सीक्वेंस पे, क्योंकि उस पे बहुत सारे एरर्स रहते हैं, बहुत सारे गैप्स रहते हैं जो हमें नहीं मिलते हैं. तो आपको वो चीज जानना बहुत जरूरी है कि वो गैप्स कहाँ हो रहे हैं. अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, तो आप जो डेटा प्रोड्यूस करोगे वो गलत डेटा रहेगा, because it won't match with the person who's wanting the analyst, right, who's wanting the report. आज अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर हम कैंसर पे सीक्वेंसिंग करते हैं और कैंसर पे रिजल्ट लाते हैं, अगर हमारे बायोइन्फॉर्मेटिक्स टीम नहीं रहेगी, तो रिजल्ट भी गलत मिलेगा, जिससे कि इंटरप्रिटेशन गलत होगा, एंड ऑफ द डे पेशेंट को गलत ड्रग डिस्कवरी और हो जाएगा. So you have to have a proper base, at least in science and maths. These are the two major core competencies you require, and rest of the thing you can learn while working and build it up in the future. Correct. So can we talk about the key role of bioinformatics? What is the key role of bioinformatics? Yeah, the key role of bioinformatics, if you ask me, like bioinformatics is a interdisciplinary and multidisciplinary kind of a thing. Still people all around the world are discovering new ways of use cases in the real-time potential. So if you ask me, the key roles, like genomics plays a huge role into bioinformatics right now. Proteomics is also a very emerging field जहाँ पर bioinformatics use होता है. Proteomics is a study of structure, function, and interpretation of protein, how it interacts with other molecules, and that is how it is done, right? So metagenomics is also one of the aspects. System biology, आप जो system बना रहे हैं, वो डेटा मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा है, उसको आप कैसे टूल्स में आप कंबाइन करके एक एनालिटिक रिपोर्ट निकालते हैं. स्ट्रक्चर बायोलॉजी इज वन ऑफ द थिंग. Then there are comparative genomics approaches, like अगर ये डेटा आ रहा है तो उसमें सिमिलैरिटी क्या है. Epigenomics, pharmacogenomics is a very emerging field in India. पहले तो pharmacogenomics उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया जाता था. So pharmacogenomics is study of how individual genetic makeup influences the response to drugs.
तो आपकी बॉडी में पहले, फॉर एग्जांपल इफ यू सी लाइक इंडिया में भी प्रैक्टिस जनरल मेडिसिन. So if you go to a doctor, you get a drug, then again doctor will change your drug, maybe the timing and this that. So ultimately the drug is not made for you, and every drug has a side effects, whether you take it or not. But like in India, if you see the data, like maximum in worldwide as well, so maximum that happens due to adverse side effects of drugs. So that is where bioinformatics and pharmacogenomics can come into the role, where we can do drug discovery, and with pharmacogenomics we can have an individual genetic makeup and see how the drug responses to the particular body. So this is one of the very emerging field, and bioinformatics is one of a very great field where we are also pitching into. So like immunoinformatics involves the application of bioinformatics tool to the study of immune system. So आपकी immunity कैसे काम करती है उसके भी डेटा हमें मिलते हैं, डेटा पॉइंट सेट्स रहते हैं, तो उसके हिसाब से भी ड्रग बनाया जा सकता है, इम्यून रिसेप्टर्स और ये सारी चीजें बनाई जा सकती है. And end of the day it will help, like bioinformatics will help the whole biological system as well, and to have a better understanding how your body works with drugs and other part of the things. Like agrigenomics is also one of the great emerging field. So as for example, a lot of scientists worldwide are working on getting a seed which is like shock proof and rest of the thing. Like it can be a drought proof thing, it can be a environment proof thing. बारिश नहीं हुई तो भी आपका क्रॉप उग सकता है. Like you find crops in desert area which like it's not feasible also, क्योंकि it doesn't support that kind of ecosystem and condition. But due to the help of genetics and understanding and with the help of bioinformatics, these things which were not possible earlier is possible right now. आप चाहे तो मतलब जो टेम्परेचर आपको 2 डिग्री में चाहिए आप वो बैठकर 20 डिग्री में भी उगा सकते हैं. So that kind of gene editing is there, like it's also the future into the agrigenomics. Correct. So that's good. I guess this information is very helpful for the learners, those who are willing to pursue their career in bioinformatics. Saurabh, current challenges क्या आते हैं? current challenges अगर आप सोचे ना तो डेटा में काफी सारे हमें challenges मिलते हैं, like integration of multi-omics data. इसकी क्या है कि आपको डिफरेंट तरीके के डेटा आते हैं जो कि आपके डेटा सेट सही नहीं रहते हैं. फिर उसके साथ क्या होता है कि यू गेट लॉट ऑफ बायस डेटा. ओके, तो आज मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल इफ आई एक्सप्लेन यू कि हाउ आई एक्सप्लेन यू, फॉर एग्जांपल कि आपके पास अगर 10 मैंगोज हैं और 10 एप्पल्स है, तो आप अगर डेटा सेट बना रहे हो तो ऑरेंजेस का ही बनाओगे, मतलब आई मीन एप्पल का ही बनाओगे. तो एप्पल को ऑरेंज को आप कंपेयर नहीं कर सकते, बट देखने में आपको वो भी जैसे ये भी जैसे, मतलब मैं एक लेमैन की एग्जांपल दे रहा हूँ. सो ये प्रॉब्लम आता है डेटा सेट्स पे. अगर बायस डेटा आता है तो आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, उस पर बायसनेस रहेगा. जैसे आज एआई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, लाइक इन डे टू डे लाइफ इन एवरीथिंग. सो इंटीग्रेशन ऑफ डेटा एंड डेटा क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. So very important is analyzing the data. Yeah. Sequence manner, right? Right. Okay. So can we talk about the growth opportunity for a newcomer in these sectors? Like अगर वो आते हैं तो उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है. जब हम भी अगर स्टूडेंट थे तो हम भी ये फेस करते थे प्रॉब्लम्स. एंड जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स परस्यू करना चाहता है वो भी आज यही सोच के कर रहा है कि व्हाट आर द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर द मार्केट और इंडस्ट्री. सो उस हिसाब से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, अगर आप बोलते तो डिमांड बहुत ही कम है और सप्लाई बहुत ज्यादा है. अगर एज अ इंडस्ट्री एज अ कंपनी अगर आप खोजते हैं या ढूंढते हैं तो हमें बायोइन्फॉर्मेटिशियन की जरूरत है, एक्सपर्ट बायोइन्फॉर्मेटिशियन की, और उनका जो भी सैलरी पैकेज है जनरली लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज द काइंड ऑफ अ ट्रेंड इन द मार्केट. सो लाइक द डिमांड इज 10 एंड द सप्लाई इज 1. So that kind of ratio is there. So there's a huge gap, क्योंकि इस पे you require a lot of training and education as well. Like kind of thing you are doing as learn to upgrade, where you are helping students to upgrade their skills according to the industry standard. क्योंकि अभी भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स बहुत कम कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है इंडिया में. Obviously. But इसका स्कोप इतना ज्यादा है कि अभी भी लोग डिस्कवर करें कि क्या पॉसिबिलिटीज है. So it is, like I told you, it is at a very baby stage right now. It has got a huge potential. We are just doing 2% of the whole bioinformatics right now. What the
there's a huge leaps and bound of growth. So, exponential growth है इसमें. अगर कोई, for example, if you ask me, like I told you before also, like 10 lakh is a minimum average salary, 6 to 10 lakh rupees. अगर आप देखें तो अगर कोई MBA प्रोफाइल से है, इंजीनियरिंग प्रोफाइल से, तो उनको फ्रेशर में इतनी सैलरी मिलती ही नहीं है. Obviously, yeah. So if you get a starting salary of maybe 2 or 3 or 4 CTC. But for bioinformatics, somebody who has a good core skills of analyzing data, science and computing, I think it's like the job for this generation. So it's a Gen 2023 kind of a job. So huge potential in this, good package, good life. And at the end of the day, they will be helping the society. Like the outcome of bioinformatics is to help the research community and do drug development and understand more about how your body functions. Correct. So somebody who is doing bioinformatics will be contributing to the growth of India and the healthcare as well. Obviously. So I guess मुझे जहाँ तक पता लग रहा है कि स्कोप्स तो बहुत है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, बट राइट स्किल्स की प्रॉब्लम है लोगों के पास, गैप्स है. राइट. लर्निंग से इंडस्ट्री तक पहुंचने के लिए जो रिक्वायर्ड होगी. सो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि व्हाट आर द एक्चुअल थिंग्स टू बी डन ड्यूरिंग द एकेडमी? क्या होना चाहिए, क्या लर्न करना चाहिए बच्चों को? अगर किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे ये फील्ड एक्साइटिंग लगती है, तो मेरा सबसे पहला जवाब ये रहेगा कि उसको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना चाहिए. किसी कंपनी में, किसी कॉर्पोरेट में, कहीं पर भी अगर उसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी इंटर्नशिप करना पड़े, तो आई थिंक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड डूइंग अ लाइव प्रोजेक्ट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर हिम और हर. So that is one of the aspects somebody can grow their skills. And once you have a knack of doing something, I think you can learn. There are a lot of ways to learn things online. अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो अगर आप कोशिश करें, तो इंटरनेट ऐसी दुनिया है कि आप फ्री भी कर सकते हैं. You can learn free anywhere, anytime. Absolutely. Like for me, I like my background is from BCom and MBA. But though I'm running a genomics company, so I have been reading, learning every day on internet and from my colleagues and my mentors. But maximum learning वो खुद मेरे अंदर से आती है. सेल्फ लर्निंग एटीट्यूड रखना ही is the best way, क्योंकि आप अगर पैसे देके पढ़ते हैं वो लिमिटेड ज्ञान रह जाता है. आप एक लिमिट तक ही पढ़ सकते हैं. कॉलेज स्कूल 2 साल 5 साल तक ही पढ़ा सकते हैं. Obviously. 2 साल 5 साल में पढ़ाई से होती नहीं है, आपको जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा. तो अगर कोई सोच रहा है कि मैं डिग्री करके या एक कोर्स करके बायोइन्फॉर्मेटिक्स में एक्सेल कर लूंगा, तो इट्स जस्ट नॉट गोना हैपन. यू हैव टू एक्सपर्टाइज योरसेल्फ विद योर कोर कॉम्पिटेंसी स्किल्स. एंड क्योंकि चीजें इतनी जल्दी फास्ट हो रही है ना, क्योंकि the kind of computing we used to do 2 years earlier and the kind of computing we are doing right now, for example, if I tell you, just for a normal genomic panel, जो कंप्यूटिंग पावर हमें 3 दिन का लगता था, करीब 22 दिन का लगता था, आज वो कंप्यूटिंग पावर 6 घंटे में रिड्यूस हो गया. So the kind of computing, like it has increased, the quantum computing has increased. So इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रहा है. So it is a huge field. Like there are, you name it, in science and life sciences, everywhere bioinformatics takes part in that. From drug discovery to vaccine development, anything. Okay, so Saurabh, as per understanding, Saurabh, internship is more required for industry knowledge as well as getting easy jobs in the market for the industries. So, see, internship is always not possible, because generally the big companies, they look for, because again, providing internship and hiring somebody who is totally skilled with the knowledge is totally different aspect. But yeah, if somebody who has an knack can approach companies, can approach us also, like we also hire in multi-dimensional level. So there are always opportunity. Like if you are the best, you definitely get something out of it. Correct. Saurabh, इसके अलावा there is any current limitation for bioinformatics? Current limitation, like the challenges I told you about, like data quality, tools and algorithms, standardization. So these are the basic major challenges. Okay. Not as such limitations, but like simply the same thing. Okay.
So, what are the pro tips from your side, newcomer for a learner in bioinformatics? So, can we suggest some pro tips? What they do, what they don't do, or during their pursuing career in bioinformatics? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए उन्हें? कोई pro tips आप दे तो? मैं तो ये बोलूंगा कि अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मैथ्स और साइंस जिनका स्ट्रांग है वो इस चीज को लेकर आगे बढ़े. Try to work on some live projects, or there is a huge scope into entrepreneurship development as well into bioinformatics. क्योंकि अगर किसी का कोडिंग अच्छा है या किसी को इंटरेस्ट है तो there are a lot of government grants which are available for bioinformatics and development of AI tools. तो इन सारी चीजों को मतलब जस्ट आप एज अ जॉब ओरिएंटेशन ही आप ना दे दो, you can also build a startup or a business out of it as well. So, as for example, like companies who are into cancer genomics and who want to develop drugs, like pharma companies. So you can have your own startup where you can work on a very niche domain of targeted therapy or drug discovery. तो इन सारी चीजों पे लोग फोकस कर सकते हैं, which is very upcoming. So there are very few companies in India who are into who have into good domain into bioinformatics. So there are a lot of opportunities into entrepreneurship as well into bioinformatics. Correct, correct. So, Saurabh, people are looking internship, but industry is not providing internship opportunity for all the learners. तो क्या उनको courses और training करना चाहिए initials for bioinformatics or directly apply for internships or something? नहीं, बिल्कुल जरूरी है कोर्सेज और डिग्रीज, क्योंकि आपको वो बेसिक चीजें तो वहां से आप सीखते हो. क्योंकि आप फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि आप जब कॉलेज में पढ़ते हो तो ये एक मूवी की तरह होता है कि आपको सारी चीजें बहुत फैंसी और रोजी लगती है. जब आप रियल लाइफ में आते हो, काम करते हो, तो आपको रियल टाइम चैलेंजेस पता चलता है. जब तक आप चैलेंजेस, आप कंफर्ट जोन में देखिए कुछ ग्रो नहीं होता है. आप कंफर्ट जोन के बाहर निकलेंगे तभी जिंदगी समझ में आती है कि लाइफ क्या है और काम कैसे करना पड़ता है इंडस्ट्री में, प्रॉफिट क्या जरूरी है, आई मीन सस्टेनेबिलिटी क्यों इम्पोर्टेंट है किसी बिजनेस के लिए. सो ये सारे एस्पेक्ट बहुत जरूरी है किसी को, कोई भी किसी भी चीज में, चाहे आप जॉब करें या आप एक एंटरप्रेन्योर हो. तो ये सारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है लोगों के लिए. करेक्ट. थैंक यू सौरभ, आपका वैल्यूएबल टाइम. होप आवर ऑडियंस हैज ए ग्रेट नॉलेज और ग्रेट एक्सपीरियंस विथ यू, and we'll come up with more topic, we'll discuss again, and hope our informations grab learners को अच्छा लगे और learners थोड़ा सा interact करें हमारे साथ, और hope हम next video लेके आए आपके साथ. Thank you. Sure. Thanks.